Good evening. Today we are going to have syllabus. All we can take your revision. So today for revision, talked about Dr. John Milton. Then we'll Victorian poetry पर are the programs. You have daily current affair classes. 7 a.m. you have revision classes. 4 p.m. daily class. Other questions. John Milton. Samson tragedy model, Softle's model, Dante's model, tragedy, classical tragedy writers. So Samson against of John Milton wrote verse form, poetry form. It was based on Samson captured by Delilah, cheated on Samson, that she loves Samson. तार से strength होची hair will grow long, तार strength होची तार long hair. Samson, Delilah went on cutting the hair. And Samson, तापरे not cut his hair. That huge, that strength, Samson तार कैप्टर्स जो कैप्टिवेट तक करथिला ताकू सैमसन स्ट्रक्चर राइट सेटल कहले से आज आई होप आई लव्ड यू ऑल सिंस धोखा दउची टिल देन सिंस या बड़ा काई टेलिला लास्ट को आदेश down the whole chapter. Who published Paradise Lost as a Paradise Lost a novel में Paradise Lost who is that Paradise Lost को novel कराएनी आर्टिकल टा लिखा ही थला आर्टिकल टाइटल Paradise Lost A. Andrew Mdam, E. John Dryden, John Kidd, Thomas Mdam. He is the one who wrote Paradise Lost. Dryden. Satan is Paradise Lost. Satan is Paradise. Add to Sun, polar star D. Paradise. Pick
fall of man. The grand subject style भी सेमती grand हवा दरकार. तो style adopted grand style भीतर you are like a red rose, you are like fire, epic ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦି ଲାଇନ୍ର ଲାଇକ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବ, ଅବଜେକ୍ଟ ଯାହାକୁ କମ୍ପେୟାର କରାହେଉଛି ସେଇ ଯେମିତିକି ଲାଇନ୍ରେ ଥିବ. ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କାହାକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ. And in this epic family, Saturn is in Paradise Lost is compared to a moon, sun, polar star, Leviathan. Leviathan is a huge sea animal. Voltage. One reader. Epic ଅଛି is lost. Like a classical epic. Already one story ta kon Lucifer and others. Lucifer star changes. God ka packet. They started planning to they were planning to vote against. जो माने पर हैला Lucifer fall पर तारो ग्रुप तैयारी कला Moloch, Beelzebub जो मानता ता group then they revolted against two is lost जो one book हमरो post graduate syllabus रे टाइप करा है book one टा आरंभ होई vote करी सर भगवान का and he has been thrown to hell. Hell like say fire 12 दिन Day to start है to start ताको कौन TRS मॉड्यूल आरंभ हुए या मिड टू मीडिया को now here Satan is killed at moon sign. What is the purpose of starting the paradise? A. Justify the ways of God to man. 2. B. To prove the superiority of Protestantism over Catholicism. C. To show the evict Adam and Eve out of paradise. D. Show the defeat of Satan. What was Milton? So the purpose of starting the Paradise Lost was justify the way. And to justify what is God is better, God is kind, God is love. But a paradox kote one jati God is benevolent. मनुष्य को दया न करे बहुत लोग paradox. I mean God is not, you know, God is cruel. It's a paradox. By the way, that talking about cruel.
freedom of speech, freedom of expression, thought. गोटे भगवान सब किसी God has the foreknowledge. भगवान जानी बोल्ट करी Adam and Eve पुणी सेमाने disobey करिवे. They will be evicted out of paradise. God had all the knowledge. आम शास्त्र भगवान हूँ कालदर्शी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर God has previous knowledge कौन हवा को जाउची God knows it. ता संगे God allows man one mana talks about who said Milton was the poetical A. Pope, B. Dryden, C. Wordsworth, D. Dryden, Milton is the poetical. Dryden, there is a particular fables, ancient and modern, published. Dryden said the period from 1632 as dash in Milton. For period, Burton. Early period, none of the above. Milton Carl II best work published signed Samson most product of Milton. Milton sonnet method I say on his wife, on his blindness, on the late Mr. Piedmont, Lawrence of other work. What I saw it the first line on his wife lost first by wife died. First line is what hath right to do? Lines are taken from a yes, paradise lost, paradise regained, the faith. This very line is controversial. What hath अलग प्रकार अच्छी फर्स्ट रे कोमस रे गोटे मास्क कोमस रिपीट करा है because the meaning what has night to do is saying that there is some question but this according to this four options who said the reader is the real hero
Paradise? A. Stanley Fish, B. Matthew Arnold, for Lewis, I. A. That the reader is the real hero in Paradise. Pragatika, you are saying you are unable to hear my voice clearly. Just give. Am I audible now? Yep. Am I audible now? Then start this question. Who said the reader is the real hero in Paradise? The options are A. Stanley Fish, B. Matthew Arnold, C. F.R. Lewis. The right answer. Correct answer is Stanley Fish. The reader. Who is Stanley Fish? Stanley Fish, very critic, theorist, talks about literary new criticism, the response theory, criticism, are all literary theories. Stanley is connected of the response. A work of art, ପଢୁଛ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟେ ପଢୁଛ ତମେ ହେଲା you are the reader, object ହେଲା ସେ story ଆସେ ତମର ତମେ କେମିତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି forget it, x କହିଲା ଏଇଟା x y କହିଲା କହିଲା ସେ m କହିଲା ୟା forget all. ମୁଁ ପଢିଲି ମୁଁ film Hulky 1000 box office 1000 box office collection କହିଚାଲି ମୁଁ ସେଇ ଯେ ମତେ ସେ film 10% ବି app star ସେ film କିଛି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି hype ରେ ଲୋକ ମୂର୍ଖ ପଳେଇ ଯାଇକି I just did not like that. It's my individual response.
questions? So we have discussed. So John Milton पढ़ेला बेले because Milton और Shakespeare ये दी जणों को मैथ्यू आर्नोल्ड तक स्टडी ऑफ पोएट्री लगछन्ति टचस्टोन मेथड रे कहछन्ति होमर और दांते एपट हेले मिल्टन और शेक्सपियर और मिल्टन सो तांकर वर्क संगे कंपेयर करिवो तम जेकोस गोटे पोएम से पोएम जदि तांको लेवल को आसी पारला देन you can call it a great poem otherwise not तेणु मिल्टन को सबके भूली मिल्टन ऊपर क्वेश्चन निश्चय आसीबो तेणु मिल्टन टाको टी भलरे पढ़िबो मु जो तुमको कहि देछि सैमसन एगेनिस्टस गोमस लिसिडस पैराडाइज लॉस्ट ए गुडा का तांकर जो सनेट गुडा का ओके नाउ our next part is we will revise Victorian poetry. I am a because before going into Victorian poetry, we must first learn one thing. So, देखो इटा होची पहले revision class. It is expected जे you all have completed. You have already completed the syllabus, and you have already made 1 or 2 revisions. Election है वाले डेरी है वाला परीक्षा otherwise परीक्षा बहुत आगे ही सारंता है. So ये जो revision रे हमें we will simply we will simply pinpoint on certain important areas of Victorian age. Victorian age को Victoria काहे कहती? Because Queen Victoria became the Queen of England in 1837 till 1901. Longest serving queen से थिले. तांको record को के break कला? तांको record को break कला. एबे जो Queen Elizabeth II जो मरी गले, Prince Charles, बतन Charles और King Charles जो माँ, सी Victoria तांको Queen Victoria को record तक भागिले. She became the longest serving British monarch. So Queen Victoria सेइथिपई ताको कहते Victorian age because it is related to the reign of Queen Victoria. Okay. Now Victorian age comes historically देखिबो Victorian age comes just before the 20th century. So the 20th century, which is आमे जो century आमे हेलु से मनीष, we all belong to the 20th and the 21st century. Some of you were born in the late 20th century. And some of you are born in the 21st century because 2024 है जे 2001 2001 रे जन्म होइची सो सी ऑब्वियसली ताको बयस है 23 वर्ष हितो एनीवे सो विक्टोरियन एज रे मानते ग्राफ टाको थोड़ी जस्ट देखिबो विक्टोरियन एज वाज एन एज इज अ वेरी प्रॉस्परस एज वेरी financially, economically very prosperous. Already industrial revolution start हेकरी pick up करी entire Victorian society had become very materialistic society. लोको पैसा पछरे गोड़ेले, success पछरे गोड़ेले, values गुड़ा को कमी गला. एपटे देखिबो on the other side पूरा polar opposite. ताकर social values पूरा भारी conservative है गला. Women were given no freedom, nothing. घर भीतर तुम रहिबो सजडा जाइके रहिबो. Men for the field, women for the hearth. मणि पुरुष लोक बाहर को जीव काम करिवो, पैसा रोजगार करिवो. लेडीज मानकर काम होला घरे बसिकरी रोसई करिवे पिलां कथा बुझिवे. Women were not given the education भी समान को दिया होनथला. सेमती प्राइवेटली घरु लोक आस्तले, टीचर आस्तले, प्राइवेट ट्यूटर्स पढुतले. एकदम एलिट सोसाइटी हाई सोसाइटी रे जहाँ पाठ पढ़ुले अन्य माने कहीं पाठ women were not given that freedom of education. They were not given voting right. समस्ते फुल पिंधिबे. Sex was a taboo. You cannot discuss about sex. से सेक्स ऊपर डिस्कस कले D.H. लॉरेंस बोली D.H. लॉरेंस को लेडी चैटरलीज लव से लवर सेटा होची टोटली बैन हे गला पब्लिश D.H. लॉरेंस करि पैले
because he explicitly talked about sex. So seତେବେଳେ life the society was so very conservative. तेणु विक्टोरियन रे women कर condition position या थिला आउ more or less stable period थिला. इंग्लैंड रो चारिआडे कॉलोनी एस्टाब्लिश कर देछि यूरोप सॉरी अफ्रीका और एशिया रे प्रचुर पैसा सियाडो आसुछि एंड इंग्लैंड वाज मिलिटरीली वेरी स्ट्रांग एंड फाइनेंस इकोनॉमिकल आल्सो वेरी वेरी स्ट्रांग. सो मोर और लेस पीसफुल. गोटे केवल क्रिमियन वॉर होता जो क्रिमियन वॉर रे कॉम्प्रोमाइज होगा ट्रूस होगा रशिया संगे वॉर होता गोटे ट्रूस होगा किए हार जीत ना सीज फायर होगा क्रिमियन वॉर रे. किंतु क्रिमियन वॉर रे बिकॉज ऑफ सर्टेन रॉन्ग डिसीजंस बाय वन ब्रिटिश कमांडर बहुत गुड़े लोक सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर्स मरी जाते. तेणु टेनिसन रोट अ poem called Charge of the Light Brigade. Cannons to the left, cannons to the right, and a famous line tara as a examination aschi ketatha. Okay, this is all about the Victorian period. Now, the Victorian age was an age of material prosperity. The British Empire spread far and wide during the reign of Queen Victoria. The sun never sets in the British Empire. Naturally, the Victorians became highly complacent. The Victorian age refers to contradictory qualities of the mind and the spirit. It was outwardly materialistic, but inwardly it was guided by a deep spiritual vitality. The term Victorian poetry refers to the verses composed during the reign of Queen Victoria in England. I have already told you jaha कहले ना. तेणु Victorian period रे गोटे major जिनस हैला that was science versus religion. आगुरी रिलीजियस वॉर चलता गंडगोल चलता कैथोलिसिज्म वर्सेस प्रोटेस्टेंटिज्म सब चलता तापर आसला गोटे नुआ बेमारी आसला कौन ना एनलाइटनमेंट आसला 18th सेंचुरी. कॉफी हाउस रॉयल सोसाइटी कॉफी हाउस एगुड़ा सब एस्टाब्लिश्ड है. सो साइंस ग्रेजुअली मेड इट्स इनरोड्स इनटू द लाइव्स एंड बिलीव्स ऑफ पीपल. लोक मैंने धीरे धीरे साइंस को बिलीव करने आरंभ कले. सो चार्ल्स डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से गुड़ा से कहले जे गॉड मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन. मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन. सो व्हेन चार्ल्स डार्विन सेड मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन सेते पर्यंत लोक माने चर्च कौन चारिआडे लोक बिलीव करथिले जे भगवान एंटायर वर्ल्ड टाकू 7 दिन रे God has created the world in 7 days. बाइबल लिखा है 6 दिन रे सब जिनस तैयार कर दे 7th डे दिन भगवान रेस्ट नेले. तमने होल जिनस भगवान क्रिएट करी पळेले. इफ गॉड हैज क्रिएटेड सो साइंस रे डार्विन निरकन कहले रही और कथा हैला तो जदी एटा हैला सो क्रिएशन से सरी गला तो विभिन्न वेराइटी आसुची केमिति जो विभिन्न से समान जिनसर से लोक मानकर मुह बदलुची बदलुची कहीं देवे भगवान तो समस्त क्रिएट कर सारी काम सारदे. देन डार्विन सेड नो मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन. तापर बाहरला डीएनए थ्योरी बाहरला न्यूक्लियर आरएनए डीएनए थ्योरी बाहरला केमती डीएनए डिस्कवर हैला पर तुम ओरिजिन ऑफ लाइफ हैला. सो लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग. सो ये जो जिनस गुड़ाक साइंटिफिकली से प्रूव करदेले. डार्विन साइंटिफिकली प्रूव कले जे गोटे बर्ड से इंग्लैंड रे एम देखा जाउची किंतु आउ गोटे एरिया रे देखला बळकू से बर्ड रो बिगटा पॉइंटेड न होइकरी ता बिगटा होची टिके ब्रॉड पॉइंटेड न होइकरी चौड़ा होची. व्हाई इट इज हैपनिंग बिकॉज पॉइंटेड हेले कोन ना जो हैबिटेट जो जगह से रहउची से जगह से
पॉइंटेड बिक रे से निजको बंचाई पारुछ सर्वाइव करुछ किंतु जो जगह पॉइंटेड बिक काम दबनी तो सेते बेले तार इवोल्यूशन हे कि चेंज हे कि से तार बिग टा चौड़ा हैला सो इट इज नथिंग बट एन इवोल्यूशन सेम बर्ड किंतु बिग बदलुछ काहे कि ना एरिया नै कि बदलुछ हैबिटेट नै कि बदलुछ एनवायरनमेंट नै कि बदलुछ so this is how the scientifically they tried to prove everything so Victorian period what happened science started rising जेतो science ऊपर उठी उठी गला religion कौन कला तळु तळु गला science went on growing religion came down and down and down ultimately religious leaders और scientists they felt ए झगड़ा रे किछि हबनी let us come to a compromise so that is called G.K. Chesterton जोड़ा कहछन Victorian compromise that science should try to appeal to people in a religious manner religion should also try to appeal to people in a scientific manner एटा हला compromise आमु सबु बेले पिलान कहे आर बेस्ट एग्जांपल होचन रामदेव योगा आगुरु करा होतला लोक बुझुनथले किछि रामदेव जो दिन योगा को ह्यूमन फिजियोलॉजी संगे कले जे हाउ ऑक्सीजन इंटेक बढ़िले तुमर बॉडी सब ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन गेट्स प्रॉपर ऑक्सीजन सो डीप ब्रीथिंग से सु जत्तक एक्सरसाइज रामदेव कले चारि आडे इंडिया सारा लोक माने योगा कले काहे कि बिकॉज रामदेव ट्राइड टू प्रूव योगा साइंटिफिकली so people in the 20th century we are all men we are all product of science our thought process to science द्वारा governed so आमे scientifically जेतले बुझी गलो हां सत्य तो आमे science रे पढिछु जे body needs oxygen and the lungs purifies the oxygen and pulmonary vein ray gives that pure oxygen to back to the that pure oxygen back to the heart so we started believing then only Ramdev became famous all over India not over India whole world also he is famous because he taught religion in a scientific manner okay now this is about science versus religion what are the characteristics of Victorian poetry अच्छा Victorian poetry पूर्वरु कौन थिला को टाइप रो पोएट्री थिला को बिफोर द Victorian poetry ए Victorian poetry को पोएट्स माने थिले Victorian poets Alfred Lord Tennyson, Matthew Arnold, Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning and the pre-Raphaelites, Christina Rossetti, D.G. Rossetti, S.C. Swinburne, एमाने सब they are the successor of the romantics तांको पूर्वरु थिले वर्ड्सवर्थ के romantics माने थिले तो romantics माने काहे against रे गले they went against the reason the logic and the outdated language of the 18th century. The romantics, Wordsworth, Coleridge, Keats and Shelley and all this decided, let us write poetry in a common man's language. So that any common man विषय लिखिबा आ तांकरी language जो use करछन से language रे लिखिबा so that आमे तांको access करि परबा से हमको access करि परिबे आम पोएट्री टा जेंति 18th century poetry was confined to the upper class सिटी लोक मान पाखे confined थिला धनी लोक ये माने गहन रे confined थिला एमाने कहले हम सेठू बाहर करि आनिबा पोएट्री तो ताकू हम कॉमन मैन को केमिति करबा कॉमन मैन केमिति हम द्वारा अट्रैक्टेड हबो आमे जदि ता विषय रे लिखिबा ता लैंग्वेज रे लिखिबा then only the common man will have a desire to read poetry तेणु एमान जेतले रीजन को कॉमन सेंस को एम्फसिस देले रोमांटिक पोएट्स
से माने कहले इमेजिनेशन और इमोशन एंड रोमांटिक पोएट्स सिटी लाइफ रु गले भारी रूरल एरिया को इनटू द लैप्स ऑफ नेचर सो तांकर एरिया हला रस्टिक्स रूरल पीपल विक्टोरियन पीरियड रे से माने कोन कले ना दे गिव इंपोर्टेंस टू इमेजिनेशन किंतु विक्टोरियन पोएट्री पोएट्स से माने कले ना आमे कहीं एमाने पूरा अर्बन को गले 18th सेंचुरी एमाने पूरा गले रूरल एरिया को विक्टोरियन लोक माने विक्टोरियन पोएट्स they addressed the rustic village people as well as the city people ସେମାନେ city people को विषय लिखले plus village people को विषय भी लिखले this is the attitude of the Victorian poets अच्छा Victorian poets गुड़ाको mostly ସେମାନେ केही optimistic नथिले केवल रॉबर्ट ब्राउनिंग छाड़ देले they were very pessimistic because लोक माने सेतबेले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हे गलानी माने मास एक्सोडस गाँव मानक टाउन्स को सिटीज को आसिले लोक हाथ में बहुत पैसा हो गलानी पैसा हो गला पर कौन है ना रिच और पुअर भीतर डिवाइड आसीगला जमती तुम देखुच ही गोटे गोटे मुकेश अंबानी गोटे पुओ बाहर खर्च कर दिन राति गूगल न्यूज आस दिन 24 आवर्स तुम गोटे न्यूज देख न्यूज पेपर देख से मुकेश अंबानी पुअर बाहागर सो एज इफ से मस्त बड़ जनरल नॉलेज क्वेश्चन Mukesh Ambani's son married to who? When was the marriage held? जेमती सब होची काहे की ना तमे माने क्यूरियस है कि लोक माने क्यूरियस है कि से न्यूज़ टा को देखुछंदी बोले से न्यूज़ टा बारंबार आसुची लोक खाइबा को पाउनी किंतु वेरास से माने 50,000 कोटी टका खर्च करछत गोटे बाहर अंडरस्टैंड दिस इज द डिवाइड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर How come Mukesh Ambani became so rich? Because he had number of companies, number of industries. So he earned more money. So jette industrialization hobo, rich और poor भितरे division टा सेते होबो. तेणु slums हला, poverty आसिला, disease आसिला, exploitation आसिला. एटा होची तार negative impact of industrialization. जोटा कि विक्टोरियन पीरियड चार्ल्स डिकेन्स तांका नॉवेल गुड़ाक सब देखले पिकविक पेपर्स आरंभ करके सब ब्लिक हाउस हो तांकर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हो he showed the David Copperfield he showed the exploitation of the poor by the rich by the system by the industrialists ए गुड़ाक से विक्टोरियन पीरियड रे देखले सो ये जो लाइफ करप्शन मेटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअल वैल्यूज डिक्लाइन ए जिनस गुड़ाक जिते लोक मैंने देखिले जो मैंने सेंसिटिव लोक जो मैंने साइंटिफिक तो से भारी खुशी हेले जो वी आर मेकिंग इमेंस प्रोग्रेस किंतु जो मैंने फिलोसोफर्स जो मैंने राइटर्स से मैंने फील कले जे हाउ द वैल्यूज मानविकता फैमिली वैल्यूज social values how these values are declining तेमन सेमान सबु सैड दुखी थिले पेसिमिस्टिक थिले सेमान आ किछि करि होवनी पृथ्वी वर्तमान सियाड को गलानी माने सेमती जीव आमे ताको किछि चेंज करि परिबानी सो दैट इज व्हाई द विक्टोरियन पोएट्स वेर pessimistic. They had no hope. Now, already got you focus on the romantic poetry, mainly focused on rural and rustic life, and it was no way related to the city life. On the other hand, Victorian poets used language as well as themes common to the city life and thus wrote about the masses and for the masses. They wrote both about the country people, village people as well as for the city people. Okay, these are Victorian poetry characteristics. So who are the famous Victorian poets? Our famous Victorian poets are
पेसिमिज्म को कहले ऑलरेडी बुझे देछि क्वेश्चनिंग गॉड ऑब्वियसली डार्विन जतबेले तांका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज struggle for survival and struggle for existence survival of the fittest कहले आसे प्रूफ करके देखाई देले so people started questioning God मु आजिकली देखुची देख सेटा विक्टोरियन पीरियड है बर्तमान 150 वर्ष मिसे ऐड कर दे जा बर्तमान केते पिला भगवान को विश्वास करछन कहले आजिकली आमर जो बिलीफ थिला आमे जो सोसाइटी रे बढी थिलु द वे वी ऑल ग्रू अप आमर थिला ए दिन आइंस खाइबनी से दिन आइंस खाइबनी एटा हनुमान को बार एटा शनि कर बार एटा लक्ष्मी कर बार सो वी वेर सेमी कंजर्वेटिव पूरा कंजर्वेटिव न होइतले भी वी वेर सेमी कंजर्वेटिव आजिकल ए जो प्रेजेंट जनरेशन जेन जी ए जो जनरेशन टारे जस्ट इमेजिन करो किए तक मानुची डू दे केयर जो ठाकुर पूजा अच्छी गणेश पूजा सरस्वती पूजा नॉट फॉर गणेश एंड सरस्वती गणेश पूजा सरस्वती होची आमे नुआ ड्रेस पिंदिबा से पाठ पढ़िबानी बुलिबा ऑब्जेक्टिव सेटा ऑब्जेक्टिव गणेश की सरस्वती नो बिकॉज कॉलेज में देखिछि गणेश पूजा सरस्वती पूजा हो पिला जोरदार माने पुओ झील दे एंजॉय द लाइफ लाइक एनीथिंग किंतु पूजा जिन सर जाए मुझे देखला बेलू सरस्वती या गणेश पियन साइकेल पछपटे सरस्वती गणेश जाऊे विसर्जन यही है भक्ति अंडरस्टैंड सो इन द 21st century we have started questioning the very existence of God. The characteristics are now major Victorian poets. So examination point of view ru mu kahibi amara major Victorian poets kiye kiye rahile प्री राफेलाइट पोएट्स को भीतर जाऊनी ए माने हेले मेजर पोएट चार जण अल्फ्रेड टेनिसन मैथ्यू आर्नोल्ड रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग्स वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ओके नाउ ए चारि जण को जदि विक्टोरियन पोएट्स को तुम देखिबो टेनिसन होचंती मझिया मझी ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म मिसा he ultimately found his personal faith res rahile खुशी हे गले मैथ्यू आर्नोल्ड turned to the past very pessimistic turned to the past for solace and sustenance अतीत को गले तांका स्कॉलर जिप्सी पोएम रे so he moved present to पळे गले ancient days को past को पळेले ब्राउनिंग is a person ब्राउनिंग कहले Pippa's song Browning कहले if God is in heaven all is well in this world कहीं कि बस भाबिबा जे किए साइंटिफिक स्पिरिट हमु नष्ट कर दबो ये फॉरगेट इट भाबिने गॉड इज इन हेवन सो ब्राउनिंग वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक गॉड इज इन हेवन भगवान अच्छे सब सब ठीक कर देबे सो ब्राउनिंग्स एटीट्यूड वाज दिस मैथ्यू आर्नोल्ड वाज वेरी पेसिमिस्टिक Alfred Tennyson was pessimistic, but later on he became hopeful, and Browning was very very optimistic. तेणु टेनिसन कर बहुत पोएम्स अच्छी टेनिसन कर केते गुडी जिनस मन रखिबो टेनिसन बिकम अ पोएट लॉरिएट
आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ मरले 1850 रे वर्ड्सवर्थ मरीगला परे टेनिसन हेले पोएट लॉरिएट ओके नाउ टेनिसन केते बड़े पोएट लॉरिएट हेले अगेन सेटा मतलब सर्टेन पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड there was a poet called Samuel Rogers. There's a poet called he was a poet. Samuel Rogers was a poet. किंतु सी थे बहुत भल क्लोज फ्रेंड ऑफ बायरन और वर्ड्सवर्थ सैमुअल रॉजर्स जड़े पोएट थिले ही वाज ए गुड फ्रेंड ऑफ बायरन और वर्ड्सवर्थ किंतु वर्ड्सवर्थ बायरन एते पावरफुल पोएट्स थिले जे ये लुचि जाई ये हजि जाइथिले तांकर पॉपुलैरिटी रे सैमुअल रॉजर्स एज ए पोएट हजि जाइथिले पूरा तांक लोक जान नथिले सिपाई किंतु सैमुअल रॉजर्स को ऑफर आसिला टू बिकम द पोएट लॉरिएट वर्ड्सवर्थ मरीगला परे सैमुअल रॉजर्स को ऑफर आसिला टू बिकम द पोएट लॉरिएट Samuel Rogers मना कले he refused Samuel Rogers refuse कला परे after his refusal Tennyson became the poet laureate became poet laureate in 1850 in 1850 so Tennyson Samuel Rogers मना कले पर जाके Tennyson हेले पोएट लॉरिएट ओके सो Tennyson को क्वेश्चन होची कोटा तांकर इंपोर्टेंट पोएम्स होला लुसिडस जोटी की प्राय परीक्षा रे क्वेश्चन जोथरा आसे म कहूची सो Tennyson कर कोथरा आसे सॉरी लुसिडस मो यूलिसेस रे यूजुअली ए पोएम रु ही टेनिसन कर आसे क्वेश्चन ए पांचटा पोएम मोस्ट द लेडी ऑफ शैलेट क्रॉसिंग द बार इन मेमोरियम द लोटस इटर्स और यूलिसेस मैथ्यू आर्नल्टर हला गोटी मेनली आसे थायरसिस स्कॉलर जिप्सी डोवर बीच थायरसिस स्कॉलर जिप्सी और डोवर बीच आओ ब्राउनिंग को सब ऐसे जोटा ब्राउनिंग इज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग ब्राउनिंग कर हला फ्रा लिपोलिपि Pauline his first work is Pauline which was published in 1833 so ये हला रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग कर हला जो पोर्टुगीज सनेट्स और ऑरोरा ले सो एत्ती की फिक्स्ड पोएम एमान को विषय पढ़िले you will answer all the questions from the Victorian age. A prose writers को भी दिजन टॉमस कार्लाइल जॉन रस्किन एत्ती की तमे पढ़िबो किंतु माने मो पॉइंट है मो एगुडा का काहे पढ़ेली ना तमरो स्टोरी भला मन रही गले यू गोटे लाइन को जब सपोज गोटे कोटेशन आसला से कोटेशन जानी देले तुम इमीडिएटली आंसर कर पर गेस कर पर गोटे किए कर बिकॉज मल्टीपल चॉइस नॉट नेसेसरी तुमको 100 रैंक क्वेश्चन आसीबो केते गोटे क्वेश्चन तुम गेस करियो पड़िबो रेयर अछंती जो मन को 100 रु 100 क्वेश्चन आसीबो
Okay, now let us come to the Victorian poets. Alfred Lord Tennyson. Tennyson is one of the most skilled and self-conscious poets of the Victorian age. He is typical Victorian who adopted the conventional religious and social views and values of his age. His early poems were not much accepted, but gradually he sharpened his skills. Tennyson ka jo music, tankar meter, pe he is famous. Beautiful lines he has written. There are 20 multiple choice questions. We will talk about those. Questions. Okay, his poem, The Idylls of the King, is preferred by many people even today. In Mortality Arthur, he turned Mallory's story into poetry. Mortality Arthur of Tennyson, what he did, he turned Mallory's story into poetry. It was Thomas Mallory's story. That was a poetic form in Mortality Arthur lecture Tennyson. He did experiment with different meters. In his long poem In Memoriam, he laments for the death. Again, In Memoriam re, tamu jo question ase, In Memoriam, Tennyson start kala Arthur Hallam, his friend, very close friend. In Memoriam re etik minimum मन रखिया पड़िबो जे आर्थर हैलम थिले टेनिसन को अति भलो सांग. आर्थर हैलम जब टेनिसन को घर को आसिले तो Tennyson had a sister called Emilia, and Arthur Hallam, both of them got attracted towards each other and they loved each other. तापर से मैंने engaged हे गले, दीटा जाको family पे कोई surprise हे गला, shock हे गला. भी हमको किच्छे जोड़े ना दी ना कर engagement हे Emilia and Arthur Hallam. But unfortunately Arthur Hallam apoplexy गोटे बेमार जोटा कि हमें brain hemorrhage कोचे एबे. ताकि से apoplexy हला 1833 रे Arthur Hallam died. 1833 रे Arthur Hallam died of a brain hemorrhage or apoplexy. So Tennyson immediately Arthur Hallam रो मरिबार 1833 रे लेखा आरंभ कले In Memoriam. तापरे 1850 रे सॉइला 17 years. So In Memoriam is not it's not a conventional elegy. It is a cyclic, it has 31 lyrical cantos. In Memoriam is a collection of 131 lyrical cantos. 131 lyrical cantos. It is divided into, it's a collection of 131 lyrical cantos. In Memoriam re gote prologue achi a gote epilogue achi. In Memoriam poem re gote prologue achi a gote epilogue achi last re. And the epilogue gote epithalamion achi gote wedding song achi. So question ase In Memoriam ends in what? The end of In Memoriam re ending heichi kono? Setpai कहती it's In Memoriam ends with hope. Start करची lamenting the death of Arthur Hallam, but ends in marriage. कहार कहार बागर होची ना Tennyson's sister Cecilia. Tennyson's sister Cecilia marries Tennyson's sister marries Edmund Lussington. He marries Edmund Lussington in 1842. The poem ends with the marriage of Cecilia, Tennyson's sister, with Edmund Lussington in 1842. So, In Memoriam poem ro main points कौन कौन? It is lamenting the death of his friend Arthur Hallam, who dies of apoplexy or brain hemorrhage. Tennyson jo 17 years 1830 through 1850 भितरे से जो long trauma, long suffering
जो लैमेंट कर मोर्न कर दुख कर फीलिंग सैड फॉर हिज फ्रेंड से गोटे फेमस लाइन लिखाई इन मेमोरियम गोटे फेमस लाइन जो बारंबार क्वेश्चन आसे परीक्षा आसे सब प्रकार एग्जामिनेशन रे इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एटा गोटे पोएम सेटा होची इन मेमोरियम रो बिगिनिंग रो ऑलमोस्ट 6th स्टैंजा तुम देखिबो टेनिसन हैज रिटन इट इज बेटर टू हैव loved and lost than to never to have loved ता माने कौन दैट मीन्स ये जो 17 years with से फील कले ये जो माय लव फॉर आर्थर हेलम is far outweighs the grief of my friend. So my love is very, very crucial and valuable. So it is better to love and lose than never to love. So that's in memoriam, famous lines. Acha, in memoriam ends with a marriage. Marriage between whom? Cecilia and Edmund Lussington. Then 1842. Okay, this is about in memoriam. Tapra let us come to let us come to the other poem, the Lotus Eaters. The Lotus Eaters कौन से पोएम टा आम पाठ पढ़ला आम ऑनर्स थिला the Lotus Eaters. Lotus Eaters पोएम टा हैला that Odysseus जेतेबेले ट्रोजन वार सारी करी एकदम वार वेरी टायर्ड है कि सब घर को फेरचंदी तांका लोक मन मैरिनर्स मानक संगे बाटरे से माने दे लूज देयर वे आसी गोटे आइलैंड रे पहुंचन से आइलैंड रे व्हेन दे रीच दैट आइलैंड से हम देखुचंती जे लोकोडा सब ड्रीमी आइड आफ्टरनून थाए सब बळे ड्रीमी आइड जिंदे ड्रग एडिक्ट भले समस्त आंता समस्त हाथ रे गोटे लोटस प्लांट अच्छी स्टेमटे अच्छी तो आंकर मैरिनर्स माने ताको खाई दैछंती जो खाईगला परे से माने से ड्रग एडिक्ट है आमे आम भाषा रे से ड्रग एडिक्शन सेला बड़ से भाभी अरे आउ किए घर को जाऊँ यही टाइम सब चिरदिन पे रही से सब कहते जे वी नीड ए लेजरली लाइफ व्हाई शुड वी टॉयल ढेर युद्ध कलु यथेष्ट टायर्ड एते दिन पर आम घर को फेरबू आम वाइफ आमको चिन्हबनी आम पिला आमको चिन्हबेनी सो इट इज बेटर कहीं से जीवु इट इज बेटर टू स्टे हियर सो Odysseus trying to exhort them, trying to inspire them ये पागलामी करनी let us regroup घर को चला तब again we'll go for another war. So Lotus Eaters it's about this and Lotus Eaters famous quotes गुड़ाक अच्छे Lotus Eaters question आसीबो it will come about on the quotations only because beautiful quotes तारा अच्छी. Then comes Lady of the Shallot. The Lady of Shallot, she was cursed. सी गोटे जगह गोटे रिवर साइड रे कैमलेट ठू दूर रे गोटे टावर रे इम्प्रिजन होकर अच्छी ताकू गोटे कर्स अच्छी अभिशापटे कि तू आउटसाइड वर्ल्ड एक्सटर्नल वर्ल्ड को डायरेक्ट देखि पारिबु नाही तो आउटसाइड वर्ल्ड को केमते देखिबो से सब बेले सिलाई करथबो तेणु आउटसाइड वर्ल्ड से गोटे मिरर थ्रू रे देखे से मिरर को ना मिरर रे जो मान लोक सब जीवासा करते से मिरर तांको देखुथबो जो दिन से डायरेक्टली देखिदेव अनईदेव से दिन से कर्सटा ताक से मरजिव दैट वाज द कर्स तो शी इज टू वीव एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड शी लुक्स एट थिंग से मिरर को देखी 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 अनई चलथिबो दिने कौन होता ना सर लैंडसेलट जन आसवे गोटे नाइट आसवे ही सो हैंडसम एंड ऑल कि ताकू देखिकी पूरा फिदा पूरा इम्प्रेस्ड
से सबू छाड़ी कि से कर्स फर्स कथा भूली से सांगे सांगे डायरेक्टली अनै देची झरका बाटे जब से खिड़की बाटे डायरेक्टली देखी देची कर्सटार इफेक्ट पड़ो एंड सडनली से गोटे बोट राति गोटे बोट्रे बसला एंड शी मूव्स टुवर्ड्स कैमलट गला बेलू से सकाळ होला बेलू से मरी जाइए एंड मेनी नाइट्स एंड ऑल दे कम एंड सी से लिखी द लेडी ऑफ शैलट लैंडसेलट आसी कहूँ जे शी वाज रियली फेयर एंड लवली एटा द लेडी ऑफ शैलट सो द लेडी ऑफ शैलट द लोटस इटस एंड क्रॉसिंग द बार ही टॉक्स अबाउट जे व्हेन एवर क्रॉसिंग द बार माने कोन बारटा होची एटा बार एपटा हैला वर्ल्ड ऑफ डेथ एटा हैला लाइफ एटा क्रॉस करके मैन इज गोइंग टू मीट हिज गॉड गॉड होजन कोन ही टॉक्स अबाउट पायलट के गॉड जे डोंट क्राई से कोचिंग क्रॉसिंग द बार व्हेन आई क्रॉस द बार मुझे आरपुर को जीपी मोपे की कांदीबनी बिकॉज आई एम गोइंग टू मीट माय पायलट सो नोबडी शुड क्राई सो टेनिसन को एगुड़ा है फेमस पोएम्स आउ गोटे है यूलिसिस अच्छा another poem of Tennyson is Ulysses in Ulysses अच्छा यूलिसिस किए यूलिसिस होचंती द लैटिन फॉर्म ऑफ ओडेसियस होमर का जो ओडेसी होमर कर ओडेसी रो जी होचंती प्रोटैगनिस्ट हीरो ताका नाम होची ओडेसियस यूलिसिस होची रोमन लैटिन फॉर्म ये ला ग्रीक ये ला लैटिन फॉर्मेट सेटा है यूलिसिस सो अगेन यूलिसिस आल्सो इज गोइंग टू इथाका तां निज घर को सेते से देखुछन निज घरे से माने ही सी सो मच he has become such a warmonger I will say जिससे घरे गोटे मुहूर्त बसिया चाहूना तो he decides कि मु मो पुओ टेलीमैकस को सब माने रेस्पॉन्सिबिलिटी देकरी पुणी चली मोर किसी मैरिनर को सांगे पुणी चली मो युद्ध पे टू वॉर टू मूव इनटू द वेरियस वर्ल्ड बुलिबा देखिबा पृथ्वीटा को देखिबा अंडरस्टैंड सो एटा होची यूलिसिस एंड यूलिसिस लास्ट टू लाइन जोटा अच्छे सब परीक्षा रे पड़े से टू सीक टू स्ट्राइव एंड नेवर टू यील्ड टू सीक टू स्ट्राइव एंड नेवर टू यील्ड हार मानिबनी सेति कहती टेनिसन्स यूलिसिस एंड्स इन ऑप्टिमिज्म कहीं से कहते जे फॉरगेट एवरीथिंग माड़ी चलो नेवर गेट बॉग डाउन by any pressure or any duress. तापर मैथुआन रॉबर्ट ब्राउनिंग ब्राउनिंग इज अ मेजर विक्टोरियन पोएट who voiced the mood of optimism in his works. For Browning जोड़ा मु कहली बा पीपल्स सॉन्ग रे if God is in heaven all is well in the world. He is a very optimistic Victorian poet. Question as to who is the most optimistic Victorian poet? It is Robert Browning. Robert Browning is the most optimistic poet. Okay. For Browning, the intellect was more important than the music. His great knowledge was the result of his self-study and travels. His reputation is higher as the writer of dramatic monologue. So Browning का speciality कौन थी ला? Dramatic monologue. अब Browning mind you, Browning कहाँ को बाई थे? Browning बाई थे Elizabeth Barrett Browning. And Elizabeth Barrett Browning का family Browning को केब्बे भल पाउन थे. They never wanted Elizabeth Barrett Browning to marry Robert Browning. Then ताकि से disinherit कर दे, disown कर देले. यदि बाही गले, माने बाह already से माने बाही ये चंद secretly. Elizabeth Barrett Browning कहू भी नांती जे से बाही साचंती. तां घरे अच्छंती. से जो पोर्टुगीज पोएम लिखुचंती सब रॉबर्ट ब्राउनिंग पे लिखुचंती. किंतु तांगले पचारंती से कहते ना ना मुझे पोर्टुगीज पोएम सब तो मुझे ट्रांसलेट करुची. अंडरस्टैंड? दैट इज वाई रॉबर्ट ब्राउनिंग
एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को निकनेम देथिले पोर्टुगीज, निकनेम देथिले पोर्टुगीज। तापर दे गॉट मैरिड, साने पळेले, तापर इटली गले, पळै गले। तापर माने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का फैमिली ताको मुह को चाहिए, माने एलिजाबेथ रो मुह को चाहिए माने ताको फादर ताको डिजोन कर देले, रहिला 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 टिल शी डाइड। They never accepted her. Okay, so Elizabeth Barrett Browning करो, she became famous immediately. She became famous. ताका प्रथम early time रो जे लिखा उड़ा करे sonnets आउ ताका aurora ले she became famous. किंतु Browning को famous होने को बहुत time लगता है। So Elizabeth Barrett Browning was more talented than Robert Browning. So Robert Browning का रहेला main जिनसटा हैला ताका dramatic monologue. So dramatic monologue टा तमरो होची कोन forms of literature अछि। So what is a dramatic monologue? Dramatic monologue एतिक मन रखता है, mono माने कोन one। So at the character first person perspective रे कहत I first person चलथिबो, he will be speaking to an audience. The audience is silent and unseen. जो audience को से the poet is talking, speaking, addressing, से audience टा is not visible to the is unseen and silent. They are simply silent listener. ये होचन the speaker, से होचन सब listeners, silent listener, से respond करते थे। এটা হচ্ছে ড্রামাটিক মনোলগর সেটা। তো এই যে ড্রামাটিক মনোলগর সে করান্তি, সো হোয়াট হ্যাপেন্স, তোমার ইটস এ লিরিকাল পোয়েট্রি, তোমার ভিতর সাইকোলজিকাল তোমার ফিলিং, তোমার মুড, সেটা গ্রাজুয়ালি স্লো অ্যান্ড স্টেডি প্রসেসরে তুমি তোমার ভিতরর ফিলিংটাকে এক্সপ্রেস করিপার। সো ইট ইজ মোর অফ আ কাইন্ড অফ আ সাইকোলজিকাল রেভুলেশন। এটা হচ্ছে ড্রামাটিক মনোলগর ফিচর। ফার্স্ট পার্সন পার্সপেক্টিভ, ফার্স্ট পার্সন কହୁଥିବ আইটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন। सेकेंड होची साइलेंट अनसीन लिसनर। थर्ड होची केही माने तमर साइकोलॉजिकली धीरे धीरे तमर एंटायर भीतर फीलिंगटा, तमर साइकोलॉजी तुम मन भीतर कौन कौन चलुची से गुड़ा को स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस रे रीडर जानिया को पाए। अंडरस्टैंड? सो ब्राउनिंग करो स्पेशलिटी होची ही वाज अ मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, तापर मैथ्यू आर्नल्ड। आर्नल्ड का स्टडी ऑफ पोएट्री अच्छी, डोवर बीच, थायरिसिस, स्कॉलर जिप्सी, এটা হচ্ছে মেন ম্যাথ্যু আর্নল্ড। Arnold was a great poet and critic of his time. He had been a professor of poetry in Oxford. এটা মনে রাখতে হবে। And Arnold was a professor of not literature, he was a professor of poetry in Oxford University for 10 years. His works truly represent his age. A sad undertone runs through nearly all his poetry. ମୁଁ କହିଛି Arnold is very pessimistic, so ସବୁବେଳେ କହିଲେ କିଛି କିଛି ହେଇପାରିବନି। He was very pessimistic, so ହାତ ଟେକି ଦଉଥିଲୁ ସବୁବେଳେ। His views of modern life, of its complexity, its sick, hurry and divided aims are present in his poetry. Arnold was also the headmaster of rugby school. He wrote a poem entitled Rugby Chapel. Thyrsis is a poem of lament for his friend. Thyrsis is what I elegy for his friend Arthur Clow. Arthur Clow is a friend. तांको पे से लिखित ने गोटे elegy that name is Thyrsis. So Arnold कराला Dover Beach, Thyrsis. এটা একটা মেজর পোয়েম। In his poem The Scholar Gypsy, the poet talks about an Oxford man who joins a band of gypsies and wanders with them.
Memorial Verses is a sad poem in which the poet laments for the deaths of many poets at home and abroad. He also wrote a critical sonnet of Shakespeare, whom he praised too much. One of his other poems, Empedocles on Etna, has been highly praised, perhaps because it is not altogether sad. So Arnold होचंदी basically pessimistic. सी जो प्रेजेंट लाइफ को देखिकी सब कभी किसी ही पारिबनी ए लोक पैसा पछरे गोड़ौछंती तुम तक किसी बदली पारिबनी दिस वाज आर्नल्ड्स एटीट्यूड ओके तापर हला एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग तांकर हला ऑरोरा ले Elizabeth Barrett Browning. Another great poetess of this time was Elizabeth Barrett, who on her marriage became Elizabeth Barrett Browning. Some of her poems are too long, but in sonnet, so Elizabeth Barrett Browning, jahata भी लिखुतिले, सब very long poem लिखुतिले. तेणु तांको से जो sonnet लिखले, तांकर thought टा limited है because sonnet रो limitation अच्छी, because sonnet is only a 14 line poem. तेणु तुम जहाँ लिखो सी आ 100-200 लाइन हो पारबनी जहाँटा लिख 14 लाइन्स भितर से रहा हम एंड एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रोट दोज पोर्टुगीज साइकिल शी रोट लवली सनेट्स शी इज पॉपुलर फॉर हर सनेट्स एंड फॉर अ पोएम ऑरोरा ले ऑरोरा ले आउ तंग पोर्टुगीज साइकिल टा जो पोएम्स आको छाड़ा चार्ल्स स्विनबर्न एमान सब हेले सब प्री रैफेलेट पोएट्स तंका नाम मन रखतिबो तांग भीतर डीजी क्रिस्टिना रोजेटी और भाई डीजी रोजेटी दीस टू आर फेमस ओके सो विक्टोरियन पोएट्री हे गला Now it's clear? Am I audible to you now? Go on, yes or no? Then we'll do MCQs. Am I audible? पहले एबा ठीक विक्टोरियन पोएट्री हैला ना नहीं? Is it clear? सुबुची ना नहीं मन Come on, like right? Victorian poetry hela na nahi na still kichi rahila doubts आउ किछि डाउट्स रहला की केते सब बर्तन केते थर रिवाइज कर सालन कहला बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स लेट अस टॉक केते रिवाइज करनी तम माने हाउ प्रिपेयर्ड आर यू ऑल केते प्रिपेयर्ड अच्छा को केते रिवीजन हैलानी Tell me. केते थर रिवीजन कलनी केते प्रिपेयर्ड अच्छा एग्जामिनेशन पाई को पिला लेख लेख लेट मी सी तुम पढ़े तुम कौन सब लिखिच लेट मी सी हाउ इज योर प्रिपरेशन तुम सब केते कौन जानिच लिखुच लेट मी सी तुम जब किछि न कहब हाउ विल आई नो
क्या वन वे प्रोसेस रे किसी लाभ ना मुझे खाली कहूबी तुम शुणुव तुम्हें जदि निजे प्रिपेयर न कर निजे निजको रेडी न कर सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन मुझे केमती जानिबी तुम्हें केमती कौन कर तुम रियली एक्जाक्टली तुम प्रॉब्लम एरिया कोड रोच इट शुड बी टू वे प्रोसेस इट शुड नॉट बी यूनिलैटरल बुझला टेल मी तुम्हें जेपर्यंत न करछ मु एमसीक्यू स्टार्ट करी कह केते प्रिपेयर्ड अच्छ बर्तमान सुधा केते अपडेटेड हो बर्तमान सुधा केते थर रिवीजन कलनी एंटायर सिलेबस टा So here are some MCQs on Victorian poetry. Which sonnet was written by Elizabeth Barrett Browning during her courtship with Robert Browning? Which sonnet was written by Elizabeth Barrett Browning during her courtship with Robert Browning? When she was in love with Robert Browning, se luchi luchi kiri gote lekhuthile poems. Which is the poem? A. Aurora Lay, B. Sonnet number 26, C. Sonnet number 43, D. Sonnet number 19. The correct answer is option C. Sonnet number 43. This is the poem she wrote during her courtship with Robert Browning. How many sonnets are there in Portuguese cycle of Elizabeth Barrett Browning? A. 23, B. 30, C. 44, D. 25. So, जो Portuguese cycle रे केतेटा sonnet थी अच्छी because these are the questions तमर आसीबा परीक्षा रे. It is option C. 44. Which poet was nicknamed the Portuguese? A. Mary Shelley, B. Sarah Hutchinson, C. Elizabeth Barrett Browning, D. None of the above. The right answer is option C. Elizabeth Barrett Browning. Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning को डाकुथले nickname देथले Portuguese. ऐसा लुची लुची लव करुथले. एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का फादर भारी डोमिनेटिंग थिले. ये लुची की बाई एचले. Did not reveal about her marriage with Robert Browning. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ताको निकनेम देथले एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को. तो निकनेम हैला Portuguese. Aurora Lay is written in how many books? A4, B12, C9, D11. The great long poem which is written by Elizabeth Barrett Browning, Aurora Lay. So, ketna book achi? Its option C is the right answer. It has 9 books. Aurora Lay is written in 9 books by Elizabeth Barrett Browning. The Lady of Shalott is written in how many parts? A4, B6, C8, D3. The Lady of Shalott by Alfred Lord Tennyson. It is written in 4 parts. It's a ballad written in 4 parts. What links the Lady of Shalott with the external world? A. Curtain, B. Wall, C. Mirror, D. Tapestry. What is the link between the outside world and the Lady of Shalott? It was a mirror. So mirror through mirror outside world को देखुଥିଲେ. कारण लेडी ऑफ शार्लट डायरेक्टली अनै परिबो नै. जो दिन से डायरेक्टली देखिबो से कर्स she will fall under the grip of that curse and she will die. So it is the mirror. Option C is the right answer, mirror. What prompted the Lady of the Shalott to look directly at Camelot? A. Lord Peter, B. Lord David, C. Sir Lancelot, D. All of the above. It is option C, Sir Lancelot. So Lancelot was very handsome. Once Lancelot say bate jaichi. So ये अनेची mirror को mirror देखो all of a sudden देखला इतना handsome लोग को जाऊँची. तो उसे संभाली न पारी करी mirror को छाड़ी करी अने दला.
The moment she saw Lancelot directly through the window, mirror टा crack करेगा. Then mirror crack कला से जानला बर्तन टाइम है गला. Curse मतलब पढ़ला. अभिशाप टाइम है गला. And I am going to let me go to Camelot. और रात रे गोटे बोट धरिकरी she sails along. So Camelot रे पहुंच आगु she dies. Which book of Homer's Odyssey does Tennyson base his poem The Lotus Eaters? Homer को Odyssey रो को नंबर बुक उपरे Lord Tennyson तांको Lotus Eaters बेस करछन. It is book 4, option B, book 5, option C, book 9, option D, book 3. The correct answer is book 9. Homer को Odyssey रो जो book 9 रे अच्छी Lotus Eaters story टाइम. Next, which time of the day Mariana of Tennyson hates the most? Tennyson wrote a poem called Mariana, which was based on Shakespeare's Measure for Measure. तेणु Mariana दिनर को टाइम टा बेसी हेट करे. 1 noon, A noon, B early morning, C early evening, D dead of the night. It is early evening. Mariana hates early evening the most. A evening time ta, it is early evening time ta ko Mariana hates the most. Which among the following is Robert Browning's first published poem? A. The Pied Piper of Hamelin, B. Pippa's Song, C. Porphyria, it is Porphyria, D. Pauline. Which is the first published poem of Robert Browning? It is option D, that is Pauline, because Pauline was published in 1833. This is the first published poem of Robert Browning, Pauline. The lines all smiles stopped together is from the poem A. In Memoriam, B. Mariana, C. My Last Duchess, D. The Lost Leader. My Last Duchess, which is a dramatic monologue of Robert Browning, तार most famous lines होची all smiles stopped together. The lines all things have rest, why should we toil alone are from the poem. All things have rest, समस्तंको rest अच्छी किंतु आमे माने कहीं कि throughout toil करिबा. These lines are the famous lines from the Lotus Eaters, because ये जो mariner माने जो माने Trojan war परे घर को फेरुछंती war रे माने करी करी tired हे छंती तो से माने Lotus Eaters lotus plant टा खाई छंती खाई साला परे से मान कर drug addiction है गला तो से मान का इतने leisure की life एटा what a fantastic life this is. So से मान को जो सबु जिन सर rest अच्छी सबु creation God भगवान कर सबु creation जदि से माने rest पाउछंती आमे कहीं की rest न नवा आमो पे leisure नहीं कहीं की. Why should we go on toiling far away from our family to दूरे रही करी खाली युद्ध करचु नले समुद्र रे जाउछु? Why should we? So these are the lines the mariners जो माने lotus stem खाइछंती से flower टाको खाइ साला परे सेही माने कहिछंती. So it is from the poem The Lotus Eaters. Why should we only toil the roof and crown of things? Eta this is a famous line from the Lotus Eaters. Lotus Eaters ra आउ गोटे होची lines रा मन रखिबो. If death is the end of life, why should life or labor be? The lines are from the Lotus Eaters. So माने तीनटे जिंस पछि जदी ultimately गोटे लोक मरिबो death होची ultimate end तो हमें काहे के अजथरे एते परिश्रम करिबा? Why should we go on toiling day in and day out? And just imagine how true it is. आमर लोक माने पैसा पछर गोडोछंती अल्टीमेटली मला बेलकु गोटे भी टंका जीव से गोटे टंका से टंका आउ किए नब तमें लाइफ टाके एंजॉय कर नथिबो तमो पैसा आउ जण किए नब
कि तमें तुम लाइफ टाक टॉयल करी कष्ट करी अल्टीमेटली मर. So they are saying, if death is the final end, why should we toil? Old age hath yet his honor. Honor and his toil is from the poem A. Ulysses, B. The Lost Leader, C. In Memoriam, D. The Lady of Shalott. So eta hochi, this is from Ulysses. So Ulysses says, old age hath his old जो लोग senior citizen है जाए. A senior citizen has its own dignity, has its own prestige, has its own honor. कि ता माने नुहे जे मोर त 60 हे गेला मो सीनियर सिटीजन टे गेली मो किछि काम दाम करबिनी किछि करबिनी घरे खाली खाई के सोइबी. You should not do that. It also has its share of toil. So Ulysses इथा करे तांको पुओ टेलीमैकस को तांकर एंटायर कंट्री टा दे करी किंगडम टा को दे करी तांका सेलर मानु कहउछंती पिले आस, let us get up, let us try, let us move out. Don't be bogged down by the number. Don't be bogged down. जे एकदम जे we have become old, आमे और किछि करियार नै. There are many countries, many things to see. Let us come together, let us try. So the last line of Ulysses hochi, that is why he says, old age hath its honor and its toil, is from the poem Ulysses. For woods like nature half reveal and half conceal the soul within, are taken from In Memoriam. Be Ulysses, the lost leader, my last duchess. It is from In Memoriam. And manne hochi kon? For woods like nature, nature ra kon? Try to understand. It actually Tennyson is writing about language, about words. Nature kon? आमे nature को पूरा देखि पारछु. गोटे जंगल को तुम जा, तुम जंगल को ना पूरा देखुछ. किछि देखुछ, किछि लुचि रहि जाउछि. सेमिति वर्ड्स गुडाक जेतले आमे जो वर्ड्स आमे यूज करछु हमर सबु फीलिंग्स पे आमे कोन एप्रोप्रिएटली एक्यूरेटली वर्ड्स रे ताको एक्सप्रेस करि पारुछु. आमे बहुत जिंस को ना हम कहि हबनी मन मते जो कष्टटा होछि मु ताको कहि पारुनी. ता माने कोन, my pain does not find the adequate expression. तमर फीलिंग्स ताकू एग्जैक्ट 100% एक्सप्रेस करिया पे तमर वर्ड्स दरकार, किंतु तम पाखरे वर्ड्स नहीं 100% एक्सप्रेस करिया पे. सो सिमिलरली वर्ड्स आल्सो इट रिवील माने देखौची, काउंसिल माने ता ऑपोजिट लुचेबा. So words माने there are poet who is using the language half reveals आउ अधे से एक्सप्रेस करि पारु नाही. मन जोटा कि से आर्थर हेलन कथा कहउछन जे माय ग्रीफ फॉर माय फ्रेंड ताको मु 100% एक्सप्रेस करि पारु इन वर्ड्स. It is better to have loved and loved than never to have loved. That I already तुमको explain कर देची In Memoriam. The inspiration of Mariana comes from which of the following plays of Shakespeare? Again, during discussion, I have already told you that he got the inspiration from Shakespeare's Measure for Measure. It is option D, Measure for Measure. Which of the following poem is classical mythology, not the primary inspiration? माने को पोएम टा क्लासिकल मिथोलॉजी रो आसीनी, इंस्पायर्ड हेनी. ए टिथोनस गोटे ग्रीक, बी यूलिसेस होमर्स ओडेसियस, सी क्रॉसिंग द बार, डी टायरेसिस. इट इज ऑप्शन सी क्रॉसिंग द बार, बिकॉज टायरेसिस टा कोन टीएस इलियट तंग वेस्टलैंड रे टायरेसिस इज अ बाइसेक्सुअल प्रोफेट. ओके, सो we have come to the end of this session. And
तुम मैंने पे किसी रेस्पॉन्ड करना वन वे ये चलती सो आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग मोटिवेटेड मत भी मोटिवेशन आसुनी तुमको पढ़ाई कारण तुम कि तुम मैंने वन वे प्रोसेस चलती तुम निजर किसी रेस्पॉन्स रोनी आई एम ऑल्सो लूजिंग मोटिवेशन मुझे जानी तुम मोटिवेशन कौन तुम प्रॉब्लम एरिया लिटरेरी क्रिटिसिज्म एत लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ाई थायरिसिस एलिजिटा को हाउ कैन आई एक्सप्लेन थायरिसिस गोटे लंबा पोएम टे प्राय तुम खाली एति मन रखता थायरिसिस इज अ एलिजी रिटन ऑन आर्थर क्लॉज डेथ जमती तुम अच्छे एलिजी गुड़ाक शेलिकर हूँ एडोनिस थायरिसिस हूँ आर्नल्ड फॉर आर्थर क्लाउ एंड इन मेमोरियम हूँ आर्थर हैलम डेथ पे टेनिसन लिखिं तेणु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिजी एमती क्वेश्चन आसो थायरिसिस पोएम रू डायरेक्ट क्वेश्चन आसोनी इट इज एन एलिजी सांगटे मरी जाए यू आर लैमेंटिंग आउ कौन सो वाइल लैमेंटिंग से खाली सांग कथा कहते तो ही गोज ऑन टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी हाउ पीपल हैव बिकम मेटेरियलिस्टिक हाउ पीपल हैव बिकम डिसऑनेस्ट हाउ पीपल हैव बिकम करप्ट सो ऑल दिस थिंग्स ही सेज अच्छा व्हाट एल्स तुम खाली दरकार प्रॉब्लम एरिया लिटरेरी क्रिटिसिज्म पूरा पूरी मोर वीडियो गुड़ाक देख भलरे ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट स्टडी ऑफ पोइट्री डॉक्टर जॉनसन्स प्रीफेस टू शेक्सपियर क्लियंट ब्रुक्स लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स सबू जाक मुझे पढ़ी बढ़िया से पढ़ी निजे थरे से वीडियो को भलरे देख भलरे पढ़ टिके भलरे शुण यू विल अंडरस्टैंड ओके आउ कौन रहा पिला कह so that's it. See you sometime next week.